Good morning, students. Let's start with quick revision. Yes, Tanmay. Better start basic rules of accounts. Good morning, sir. Good morning. चलो start कीजिए. So, with the golden rules, right? Hmm. So, for the personal account, first we have the due relationship in which we debit the debtor and credit the creditor. In the settlement relationship, the debtor becomes the giver and the creditor becomes the receiver, in which we debit the receiver and credit the giver. Then, in real account, debit what comes in, credit what goes out. And in nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Hmm. Modern approach. Sir, in modern approach, we classify them as assets, liabilities, capital, expenses, Balance and is asset debit balance. अभी वापस बोलने में time मत waste करो. Asset debit balance. asset debit balance, liabilities credit balance, capital credit balance, incomes credit balance, and expenses debit balance. Yes. It's a revision, so I hope कि you will do quick revision. Okay. Next time से मतलब Yes, all sir. of you. चलो direct entry students raise your hand. Those who want to answer basic entries. Direct entry students and please participate. चलो श्रीधर. Yes. Good morning, sir. Rand हाँ. I will ask you random entries. Credit sales. Creditor account debit, debtor account debit to sales account. हाँ, sales and you have to answer sales is our income, therefore credited. Debtors account debit to sales. Okay, like this. Collection from debtors. Cash account debit, cash comes in, Very good. debtor's account To credit. debtors giver. Very good. Debtors is a giver. So to debtors. Next. Discount allowed. Discount allowed account debit, it is expenses to Loss, debtor loss, not expense, loss. loss To to debtor's account. debtors cancelled. Hmm? Hmm. Next, bad debts. Bad debt account debit, it's a loss and debtor's account, debtor's cancellation. Debtors Cancellation. cancel. Very good, Sridhar. You are direct entry student or foundation student? Direct entry, sir. Very good, very good. Expense payable. Expense expense account debit to expense payable account. Expense all Expense 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 are payable is a liability. बस इतना ही बोलो. Expense payable is a liability. Therefore credit. Hmm? okay. Prepaid expenses. Prepaid expense account debit to expense account. Prepaid expense is asset. Very good. Income receivable. Yeah. Income receivable account debit to income. Income receivable is asset. Very good. Income received in advance. Income account debit to income received in advance account. Income received in advance is liability. Nice. Hmm. Capital introduce. Cash account debit to capital account. Cash comes in. Very good. Loan taken. Cash account debit to loan bank loan account. Cash comes in. Okay. Loan is liability. Loan is loan. Very good. You're doing it for the first time? यस सर लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी सर आपकी. ठीक है बट जो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया सम टिप्स टू फाउंड डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स क्या किया आपने सर रिकॉर्डिंग देखते वक्त घर में मीन्स आंसरिंग करता था खुद को. अच्छा रोज के रोज खुद को पूछते थे ओके और अभी यहाँ पे आंसर देने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका यस सर. यस गुड सो एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट दिस इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दिस इज द ओनली platform where you can interact with the sir and you will boost your confidence. Okay, other students who are direct entry students, please participate. In next session, who is going to answer? Raise your hand.
next session. Take it as a challenge. I will answer, sir. Wow, good. Yes, I am going to ask Virashri. Next session, you are going to answer, and MD Ali. MD Ali already answered, I think. Or Virashri and Lohit S. Yes. In next session, you will raise your hand. No? I'm not going to ask you. I'm not going to ask. You first raise your hand before session. Virashri and Lohit Ek. हाँ, okay. Gopal. Yes. Yes, sir. Can you tell me entry for furniture purchase? Sir, furniture account debit to cash account because furniture is the assets and cash is goes out. Very good. Depreciation. Depreciation account to furniture account. Depreciation is the expenses and Loss. furniture is a Loss. loss. Depreciation, not expense. Loss. Which is Loss. paying from our pocket is expense. Which is Yes, sir. not paying from pocket but still debited, it's a loss. Bad dates, depreciation. Okay, Yes. no problem. Very good. Stationery purchase. Stationery is the expenses. Stationery account debit to cash account. You are direct entry student Yes, sir. and you revised everything. Basically, sir, I am the मतलब सर हिंदी में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना, लैंग्वेज डजेंट मैटर, बोलिए। सर, ये सर मैं लास्ट बैच से फॉलो कर रहा हूँ आपको, लेकिन मैं हाँ, ऑफलाइन में ट्राई करता था आपका लेक्चर। लाइव लेक्चर में मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। थाने में आप ऑफलाइन जाते थे फिर छोड़ दिया आपने? नहीं सर, अठानी में नहीं, मैं ऑफलाइन ही आपका लेक्चर प्रेफर करता था। मतलब मैं बिलोंग करता हूँ लातूर से, लातूर से। महाराष्ट्र से। हाँ। हाँ, और ऑफलाइन में लेक्चर किए हैं और जनवरी का भी अटेम्प्ट मैंने दिया है, ये हम्म। लास्ट ईयर का। हम्म। तो शायद नहीं होगा, इसलिए अभी ऑनलाइन अब सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हम्म। रिवीजन के तौर पे आपका लेक्चर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अम, और पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हुए क्या नहीं देखे हुए? हाँ सर, मेरे ब्रांच तक हो गए हैं लेक्चर, अमालगमेशन तक हो गए हैं, ब्रांच नहीं हुआ। तो अभी इस बैच में वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके। और फिर अभी वापस क्यों कर रहे हो एज अ रिवीजन? हाँ सर, एग्जाम उतनी अच्छी नहीं गई। मतलब जितना स्कोर करना चाहिए था उतना स्कोर नहीं कर पाया, और क्योंकि कौन सा? वो जो। आज आज बात करने के बाद जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो पहले से लिया होता तो अच्छा हुआ रहता ना। जी सर, अगर उसे उसी टाइम पे अगर लाइव किया होता तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ रहता। और एग्जाम में टाइम का कैलकुलेशन नहीं कर पाया, तो नहीं ठीक है, जो भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व ये किए। बैच में हम लोग है ना, मैं ये टिप दे दूंगा आपको। डोंट वरी, अपन इस बैच में थोड़ा टाइम लगा के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व भी करें। मतलब मैं आपको पहले टाइम दे दूंगा कि इतने टाइम जी में आपने सॉल्व करना है, तो आप वो उसी तरीके से आज पढ़ाई करना, ठीक है? जी सर, जी सर। दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, पर बाकी के जी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। सो टाइम जी। मैनेजमेंट अपन ये बैच में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ओके? और ओके। अच्छी बात यह है कि आई एम विथ यू फॉर 4 डेज इन अ वीक, यस। तो और फायदा भी होगा इसका। तो आप सिर्फ सीरियस रहना टाइम जी मैनेजमेंट के ऊपर। इन दिस बैच एवरीवन प्रॉमिस मी कि वी आर गोइंग टू डू टाइम मैनेजमेंट एंड वॉट एवर होमवर्क assigned to you, you will complete it. You will not give any excuse, okay, for next 3 4 months. बस अकाउंट्स यू हैव टू डू इट वेरी, मतलब अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू हैव टू डू सीरियसली, बट अकाउंट्स में आई वांट रेगुलरिटी, और कुछ भी उसमें मुझे ऑप्शन में नहीं रखवाना है, ओके? जी सर। यस। गोपाल जी, अच्छा है आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। नाइस, वेरी वेल आंसर्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक. It's 7:10. 10 12 students joined now, so it's a request, please be on time. You are at your home, so it's better you will start your session at 7 o'clock. 6:30 को उठ जाइए और आधे घंटे में फ्रेश होके क्लास के सामने आके बैठिए तो अच्छा होगा।
तो बेटर है डेली बेसिस पे आपको ये सब करना है। ओके, नो एक्सक्यूजेस। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। Today we are going to start with preparation of financial statements. Now, what we are expecting in this chapter from students, you have to understand the balance sheet, profit and loss account, and trial balance is given in the question. From trial balance, you have to identify where to exactly post it in P&L or balance sheet, and there are adjustments. Some adjustments are tricky adjustments, some adjustments are copy paste adjustment for every question, like depreciation, closing stock. Institute may give you shares adjustment because they want to test your knowledge of shares also. And some assets are sold in between. You have to calculate profit or loss. You have to solve suspense if it is in trial balance. See, in real life, what happened? Accountant is not a chartered accountant. Accountant means who only does journal entries in the tally or in the other software. So journal entries, if he is not able to pass the entry, so sometimes we also tell to our articles, keep it in the suspense account and we will see later on. For example, in bank account passbook, he is passing entries from passbook, suppose. So in passbook, account is credited. Account is credited means there is deposit in your account. In bank, it is credited means in our book it is debited. We debit bank. Simple. In Sanket sir account, it will be debited. In bank account, it is liability. To Sanket sir account, it is an asset. So my bank balance is increased. So if he passes entry from the passbook, but he doesn't know why this account is credited. So what accountant will do, he will pass entry bank account debit because we are passing entries in the Sanket sir books. So bank account debit to suspense account. And that suspense we solve later on. That suspense we solve later on. Huh. So this is how we are going to pass the journal entries. Suspense, then we will ask party, means Sanket sir. Sir, why this account is credited? Then I will tell you ki this account is credited because one of my student, he has given me fees, or one of my client, he has given fees. So keep the entry. Now suspense account we have to remove. From suspense we cancel, and to professional fees or to tuition fees, I will credit that account. And therefore suspense is appearing in the trial balance. This is the logic of suspense account. ठीक है? साउथ इंडियन स्टूडेंट्स अंडरस्टूड व्हाट इज सस्पेंस? एक बार हिंदी में भी बता देता हूं क्या होगा। तो मैं मेरे आर्टिकल को क्या बोलता हूँ कि आर्टिकल मतलब जो भी रहेगा, जितेश है मेरे पास, तो जितेश को बोलूंगा जितेश मेरे जर्नल एंट्रीज पास कर रहा है। तो जितेश को मैंने बोल दिया भाई जितेश तू मेरे अकाउंट में क्या कर, मेरे अकाउंट में तुझे एंट्रीज करनी है। पर जितेश को मैंने पासबुक दिया, ये पासबुक है, जर्नल एंट्रीज कर ले इससे। तो जितेश, सपोज मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक में मेरे अकाउंट को क्रेडिट हुआ है। मेरे अकाउंट को क्रेडिट हुआ मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे लाइबिलिटी बताया उनके बुक्स में। तो मेरे बुक में क्या दिखेगा? मेरे बुक में एसेट दिखना चाहिए। मेरे अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, डिपॉजिट हुआ मतलब जमा हुआ उनके पास, तो लाइबिलिटी दिखाता है। तो मेरे पास वो एसेट दिखेगा। मेरा अभी जितेश मेरा अकाउंटिंग कर रहा है, वो थोड़ी आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंटिंग कर रहा है। तो जितेश को मैंने बोला बैंक अकाउंट को डेबिट दे दे जितेश, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट। और मैं बाद में तुझे बताता हूँ कि ये पैसा क्यों मिला था। मैं तो वो हर एंट्री के बाद मेरे पास आएगा। तो मैं बोलूंगा जितेश जो नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको सस्पेंस में डाल के रख दे। तो उसने एंट्री किया टू सस्पेंस।
बाद में हम लोग इसीलिए अभी ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस दिख रहा है, बैंक अकाउंट भी दिख रहा है और सस्पेंस भी दिख रहा है, और बाद में हम लोग साथ में बैठेंगे और उसको मैं बताऊंगा कि सस्पेंस कैसे सॉल्व होता है। तो उसको मैं बोलूंगा सस्पेंस को डेबिट दे दे, और ये मुझे एक स्टूडेंट से फीस आया था या मेरे क्लाइंट से फीस आया था, तो तू प्रोफेशनल फीस डाल दे बाद में, तो सस्पेंस जीरो हो जाएगा, और प्रोफेशनल फीस तो एंट्री होगी बैंक टू प्रोफेशनल फीस। तो कभी कभी अकाउंटेंट लोगों को नहीं समझ में आता है तो वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते, एंड देन दे आस्क क्लाइंट कि भाई ये सस्पेंस अकाउंट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये स्मॉल फर्म्स में होता है। बड़ी कंपनीज में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो होता है, तो नॉर्मली वहां पे सस्पेंस नॉर्मली नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां के अकाउंटेंट भी होशियार रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा उसी टाइम पे सॉल्व कर लेते हैं सस्पेंस। एंड व्हाई दिस चैप्टर? बिकॉज financial statements means this is a in real life, normally it is done by the softwares, but assume there is no software and your accountant has prepared the trial balance. So from that we have to understand whether this is expense, so we'll write it in the profit and loss account, expense or income, and if it is asset, liability or capital, we'll write it in the balance sheet. This is a very simple chapter, and therefore we are expecting from you, you will prepare it in the standard format. See, now this is the preparation of the financial statement of corporate entities. For sole proprietor also, now we issued partnership firm also, we issued the balance sheet pro forma. Previously it was in the T format, but now it is in the vertical format. Vertical format means what? Vertical format means जो सीधा फॉर्मेट है, खड़ा फॉर्मेट है. Equity and liabilities, we have to understand the pro forma of the balance sheet and profit and loss account. Today we are going to see that. Today we will see first question, and then I will explain how to the pro forma. What we are expecting from you in this chapter, you should recall all items of the balance sheet and profit and loss account, and it is in the permanency order, not in the liquidity order. There are two orders. Permanency. Permanency means what? Long term will be permanent. So permanent will be in the uh, means when you see the order, so first will be permanent items, that is the capital, then loan, and then current liability. In asset side also there is a permanency order, means first fixed asset and then current assets. So this is how the pro forma is prepared. Who gives this pro forma? But obvious, company accounts gives this pro forma 2013. In that pro forma is described. Now this pro forma is related to only companies. Sir, what about sole proprietor partnership pro forma? That pro forma were already in the foundation. But now institute changed that pro forma. Okay. Our books are not yet updated of foundation, but now institute changed the pro forma for sole proprietor and partnership. Yes, books are going to change when very shortly, but for foundation. At intermediate level, we are mainly concerned with the companies. Okay. So sole proprietor accounting, partnership accounting, books of accounts, how to keep it, that will be in the foundation course. But at intermediate level, we are expecting from students to understand the pro formas of company accounts. Okay, pro formas are very simple. Daily we will revise it, so you can easily recall it. Okay, today is the first day, but in next session on Sunday, I'm expecting from you this pro forma. Okay, it will take hardly 20 minutes, 30 minutes maximum time. But these pro formas are important not only in this chapter, but in other chapters also. Amalgamation, internal reconstruction, buyback, consolidation, and even in your some questions in the amalgamation. Amalgamation I think already covered. Okay, so financial statement, this chapter is actually divided in two parts. One is a financial statement, balance sheet and profit and loss account. And see, balance sheet and profit and loss account are prepared on the accrual basis.
and cash flow statement is prepared on the cash basis. So we have to correlate accrual and cash basis. So in this chapter, there are two units. One is financial statement and second one is a cash flow. And both units are very important from exam point of view and real life point of view. So we are starting with this chapter. Sir, why we started with the 11 number? Why we have not started with the second chapter? Reason is very simple. Before understanding accounting standard, you should understand how to prepare the financial statement. And therefore we started with the 11th chapter. Okay, not from the second chapter. I hope you got the logic of financial statements, balance sheet and profit and loss account. So which order we are following? You can write it in the rough pages. We are following permanency order. Permanency means long term will be first and short term will be afterwards. Now we have two schedules. Schedule 3 part 1. This is given in the Companies Act. Schedule 3. Schedule 3 pro forma is prescribed. Okay. Part 1 is related to Ind AS. So Ind AS, but obvious we are not concerned for Ind AS. In CA final you are going to understand that pro forma. We are concerned in the part 2. Part 2 is for accounting standards. And that pro forma we are going to see in the Schedule 3, okay, part 2 in the profit and loss account and balance sheet, here in the financial statement, okay. So every company has to maintain books of accounts at the registered office. Now see, we are not having this, when I did my articleship, at that time software were not there. So we have to maintain it in the, I have seen that books of accounts like journal, ledger, trial balance. Now you have softwares. It's like Google Pay. So you can easily see, that when you were kid, at that time checks were there. Okay. Now very check wants Google Pay or NEFT or RTGS. Okay. So now how to do payment? So it is in the digital format. Okay, Paytm karo. So at its registered office, books of accounts are in the now e-form. Okay, so financial statement and other relevant books on which basis? But obvious, we are keeping it on the accrual basis of accounts. Okay, our books of accounts are mandatory as per accounting standard 1. It is based on the accrual system of accounting. However, company may keep books of accounts and financial statement and other relevant papers electronically in e-form. Okay, electronically, now everyone is using that software. AI का जमाना आ गया, तो you know that electronically format में हम लोग ये रखते हैं. तो financial statement means what? Sir, you already taught us, no, journal entries, ledger, वो नहीं होते financial statement. Financial statement means which is in the audit report. तो audit report में क्या होगा? Balance sheet. Sorry, annual report, not audit report. Balance sheet, audit report में भी आता है balance sheet, profit and loss account, even cash flow statement. Statement of changes in equity. Now this statement is also important, but you don't have to understand it in how to 5%, and if you are holding the share more than the 5%, so you have to give names of that parties. That is a statement of changes in the equity. What is at the beginning, what is at the end, and how to reconcile buyback hua, issue hua. So that statement is called as statement of changes in equity. In exam, you don't have to prepare this. Okay. And notes to accounts. In exam also, notes to accounts are not important. In real life, I have already told you how to prepare notes to accounts, and some students were asking in my last session that notes to accounts, sir कैसे लिखने का है, क्या लिखने का. In last session he asked me, तो notes to accounts, it's a matter of time. So in exam you don't have to prepare these notes to accounts, but in real life, yeah, after becoming a chartered accountant, you can take the help of other reports and you can prepare these notes to accounts. So here in this topic, we are not concerned for this one, statement of changes in equity and cash flow statement. Cash flow statement you have a separate chapter. ये आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. सो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड यू डोंट हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स इन द एग्जाम. एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है.
Points to keep in the mind. Requirement of Schedule 3, other statutory requirements, accounting standards, and statements and guidance notes issued by the institute. तो ठीक है, मतलब ये आपको याद करना है. If specific act is applicable, for example, sir, specific act means what? Electricity Act, Insurance Company Act, okay, banking regulation. So when I was studying CA course, these three chapters were there: electricity, banking, insurance companies, financial statements of these companies. So they have a separate pro forma, and they have separate pro forma of balance sheet and profit and loss account. So now we removed it from your syllabus. Okay, अभी easy हो गया आपका. तो when I studied, तो these chapters were there. Okay, now it is removed. Specific act applicable. Okay, for instance, I already told you, insurance company, banking company, and electricity and other companies as prescribed. And all other companies we have divided in first division. Division 1, I already told you. Division 1 is Ind AS. Okay. Division 2, sorry, division 1 is not Ind AS, that is a normal division. And in the division 2 is a, sorry, it's my mistake. Division 2 is Ind AS. Okay. 1 is accounting standard and 2 is Ind AS. So Ind AS we have to see it in the CA final. तो यहाँ पे मेरा mistake हुआ. मेरे दिमाग में Ind AS first था. No, sorry. Division 1 was the Companies Act, which we are going to understand over here. And division 2 Ind AS ka pro forma, that we are going to see it in the CA final. And division 3 is NBFC, but obvious NBFC we are not having this in the syllabus. So division 1, part 1 and part 2. Part 1 is the balance sheet, part 2 is the profit and loss account. So which division you are going to see? You are going to understand division 1 of the Companies Act. Division 1 of the Companies Act, normal accounting standard, Ind AS division 2 है. एंड पार्ट 1 इज बैलेंस शीट, पार्ट 2 इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वहां पे आपको प्रोफॉर्मा मिलेगा. वेर यू विल गेट द प्रोफॉर्मा? इन कंपनीज एक्ट स्केड्यूल 3. स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3 लिख के रखो. इन स्केड्यूल 3 डिवीजन 1 पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिवीजन 1 है. नाउ trade receivable, very important from company's point of view. Trade receivable is, normally we are preparing it less than 6 months, then 6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, and more than 3 years. Bifurcation is very important. Why bifurcation is very important? Reason is very simple. If trade receivable bifurcation is not given, so it might happen that company has to do the provision for doubtful debts if your receivable are more than 3 years. Bad debt chances are more. And less than 6 months, we are giving some time. So bad debt chances are less for less than 6 months. And therefore, reader must understand your outstanding are from last 2 years or 3 years or 4 years or less than 6 months. So reader must understand it. And therefore, this aging schedule is given. Aging schedule क्या होता है? Aging मतलब अपने को डेटर्स का एज नहीं लिखना है भाई. डेटर मेरा 50 साल का है, नहीं नहीं, वो नहीं लिखना है. डेटर का एज नहीं, डेटर से कितने सालों में पैसा आया नहीं है. मैंने माल बेचा था 3 साल पहले, अभी तक पैसा नहीं दिया, वो लिखना है. उसको बोलते हैं एजिंग शेड्यूल. ताकि रीडर को अच्छे से समझ में आए कि भाई इनके डेटर्स इतने साल से आए नहीं पैसा, क्या रिकवरी करते हो क्या नहीं करते हो. कुछ भाई लोग रखो, पैसा रिकवर करके लाओ, रोज उनको कॉल्स करो. तो एजिंग शेड्यूल ये ट्रेड रिसीवेबल का होता है. किसका होता है ये? ट्रेड रिसीवेबल का. एक ही मिनट ना बेटा, मैं आईसीआई ट्यूब पे देख रहा हूं. Why 49 students are watching on YouTube? Why you are not joining our application? It's request to all of you to join our application instead of watching it on YouTube.
ठीक है, तो एजिंग शेड्यूल यू अंडरस्टूड. अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, झगड़े चालू है, दोनों भी लिख दो कॉलम्स बना के. तो ये प्रोफॉर्मा है एजिंग शेड्यूल. डिविडेंड वी आर गोइंग टू सी इट एट द एंड. So dividend you, I'm not going to take it now. Dividend part, balance sheet. So balance sheet, how it is prepared, name of the company. See, first we are going to see balance sheet pro forma afterwards. First we are going to understand in one question. In illustration number 2, we are going to see this, how to prepare the balance sheet. Okay, so this is a trial balance. Debit means what? Debit means either asset or expenses. Okay, you can write like this. लिख दो वहां पे. Debit means asset or expenses. Correct? चलो आ जाओ illustration 2. And credit means what? Income or liability or capital. Correct? So now we are going to understand the categories. चलो everyone please open your study material. Page number 11.25. I think this is third material or second. I don't know exactly. कौन सा मटेरियल है आपका? यस दिव्या. गुड मॉर्निंग सर. यस बेटा, कौन सा मटेरियल है ये? जैन 2026 एग्जामिनेशन का. नहीं नहीं वो नहीं. मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3. देयर आर 3 मॉड्यूल्स नो. हाँ सर 3. हाँ तो कौन सा मॉड्यूल नंबर है? सर 3. 3. ओके, डू हैव एनी क्वेरी बेटा? नो सर. ओके. Yeah, what do you think? Land at, you are doing it for the first time, this नो chapter? सर. नो सर. No. Okay. So, who is doing it for the first time? Raise your hand. Okay. Diksha. I hope there will be no surrounding noise. Unmute yourself, beta Diksha. यस सर. हाँ. कहाँ से हो? जम्मू. जम्मू से हो. अरे वाह, बहुत दिनों के बाद कोई जम्मू से आया है बेटा. सी, एक बैलेंस शीट का बेटा प्रोफॉर्मा दिया है. डू डू हैव स्टडी मटेरियल? अनम्यूट मत कीजिए बेटा, म्यूट मत कीजिए. रहने दीजिए अनम्यूट, आपको मैं कुछ डांटने वाला नहीं हूं. सॉरी, वापस एक बार कीजिए. बॅलन्स शीटचा प्रोफॉर्मा कुठे आहे स्टडी मटेरियल मध्ये? बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा कौन से पेज पे, कोई बताएगा क्या? एनी वन ऑफ यू? कुठे लावली गाडी?
हँडी बाईट साईडला. येस. पेज नंबर, एनी वन ऑफ यू? पेज नंबर. बैलेंस शीट का एक प्रोफॉर्मा है बेटा. पेज नंबर कौन सा है देखो? Yes, sir. Page number 11.140. 11.140. 140. बाप रे. 140 पे प्रोफॉर्मा है. कैश फ्लो के बाद है शायद से फिर. एक ही मिनट. हाँ, पेज नंबर 11.140 पे आ जाइए. कम टू पेज नंबर 11.140. पेज नंबर 11.140 तो टाकलं नाहीयेस मॉड्यूलचं. तेवढं टाक ना पटकन. नाही केलं. चलो ठीक है. यस. कम टू पेज नंबर 11.140. यस. अमलान जी. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आपने 11.140 ओपन किया? हैव यस यू सर. ओपनड इट? यस सर. Okay. Can you tell me what is given in the pro forma? सर पहले तो पर्टिकुलर्स और फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड. हाँ, current और period फिगर्स. and last year. So it is called as comparatives. Okay, you want to understand now how much you earned in the last year and how much you earned in the current year. So comparatives, what is called as? कंपैरेटिव्स. Yes, comparatives. So comparatives means last year and current year, both figures are given while preparing the balance sheet. After यस. that, what is there? फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग Okay, पीरियड. okay. Next. सर फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज. शेयर 140. शेयर होल्डर्स फंड. शेयर कैपिटल. This is in the रिजर्व. new study material or old study material, my dear? सर ये ओल्ड है, ये जुलाई का है. अच्छा, न्यू स्टडी मटेरियल एनीवन हॅज? त्या चॅप्टरला नाहीये ते, मॉड्यूल मध्येच दिलेलं आहे. सर इन दी ओल्ड इट्स कॅश फ्लो ऑन. नंतर आहे, अनेक्स्चर म्हणून असेल. मॉड्यूल ओपन कर तू, मग कळेल तुला. गुगल वरनं डाउनलोड कर. ओके. ठीक है बेटा, बोलिए. सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज. हाँ. शेयर होल्डर्स फंड. हम्म. शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड हम्म. सरप्लस. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. Share application money pending allotment, हम्म. non-current liabilities, हम्म. long-term borrowings, deferred tax ये- liabilities net. यही है क्या? देखो. Yes, sir. हाँ. नाउ शेयर कैपिटल मीन्स व्हाट? कैन यू टेल मी व्हाट इज शेयर कैपिटल इन सिंपल लैंग्वेज? Sir, Capital means, normally capital means amount which is introduced by the owner. yes, Okay. yes. So in company accounts, it is owners means shareholders. Hmm. You are from science background or commerce background? Sir, commerce background.
So you should know what is share capital. Share capital means it is amount which is given by the shareholders. Yes. Okay, correct? Yes, sir. Share capital are of two types. Yes. One is Equity share capital very good. and preference share capital. Science background student, I'm taking in detail because you are not aware about this. If you are from science background, other students, so we are taking that. Share capital, you can write it is owner's contribution. Owners are of two types. Okay, so owners are of two types. Yes, can you tell me owners types? एक minute, huh? Yes, can you tell me owners types? No, sir. Huh? No, sir. Are you already told na? Equity share capital and preference share capital. Equity share capital and Preference share preference capital. share capital. Yes. So what is the difference between equity share capital in simple language? We are not going to understand it in the law language. We are going to understand it in the layman language. So what is equity share capital, my dear? So equity is Okay. See, you already studied it in BCom, but you are not able to answer it. Why? Because we never applied common sense. In simple language, equity shareholder, equity share capital, can I write? Acha, what we are giving them, suppose if you introduce 1000 rupees, correct? If you have given me okay. 1000 rupees, so in return, what I am giving you? Only 1000 back or some extra amount also? Sir, extra amount. What is that return amount is called as? Profit. Or What? No, not profit. I'm giving you out of profit, I'm giving you dividend. yes, sir. Okay, so Yes, see, sir. science background students, you give me 1000 rupees for business as owner. So normally I'm not giving you interest. You're not giving me loan. You are owner of the business. Now interest is given only if you are giving me as a loan. Okay, on loan we are giving interest. So on capital, you are owner of the business. So I will write capital. So what I will give you in return? Your capital you will get, but also you will Profit. get profit. Now out of profit, I cannot distribute whole profit to you. So out of that, some profit, suppose I earn 100 rupees by doing business. So some profit is distributed. Assume I distributed 30 rupees. And what is not distributed? Undistributed profit is 70. So 30 rupees I have given to you is called as, yes, what is called as in law language? Dividend. Very good. It is called as dividend. And 70 rupees is called as? You know already these things. Amlan, this is called as retained earnings. What it called as? Retained earnings. Retained earnings. Simple, no? Yes, sir. Okay. So distributed is called as? Dividend. Dividend. And not distributed is called as? Retained earnings. Very good. And where this retained earning will be shown? Reserves and surplus. Under the head reserves and surplus. Understood? Yes. So in equity share capital, dividend is not fixed. If you earn extra profit, you can get extra dividend. If you earn less profits or losses, you will get nothing. But in case of preference shares, they will get fixed dividend. If company is earning extra profit, still they will get fixed dividend. So we apply prefix for preference share capital. Prefix means परसेंटेज, शुरुआत में कुछ लगाया जाएगा. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पहले हम लोग हमेशा लिखते
10% preference share capital, 12% preference share capital. So this rate is fixed. But in case of equity shares, rate is not fixed. Okay, extra profit, extra dividend. Less profit, less dividend. But what is the difference between this fixed rate versus interest rate? Interest is given in case of loan. So what is the difference between this interest rate? Interest rate is, assume interest rate is also 10%. And preference dividend is also 10%. But what is the difference? Can you tell me? प्रेफरेंस डिविडेंड में भी 10% आएगा, लोन में भी 10% आएगा, पर डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं पता? नहीं सर। आना चाहिए था आपको, अमलन. This dividend is paid only in case of profit. If company earns profit, then only they will get the dividend. Okay, sir. Preference dividend also. But in case of loan, interest you will get only in case of profit or also in case of loss. Okay, sir. लॉसेस में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉसेस में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर लॉसेस में प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा क्या? नहीं सर. नहीं. यू आर नॉट फोकस. अमलान, No. बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है क्या भाई साहब आपके? नहीं सर, एक्चुअली फर्स्ट टाइम आया था लाइफ पे तो थोड़ा वो नर्वस. देखिए, आप नर्वसनेस की जरूरत ही नहीं है ना. अपन सिंपल में, मैं इतना बेसिक लेवल पे सिखाता हूं कि भाई इससे नीचे कोई उतर ही नहीं सकता है. एक्चुअली मैं एक्चुअली मैं सर, एक ही चीज पे भरोसा रखता हूं कि मेरा जो लेक्चर है कोई भी बैकग्राउंड का आदमी देखे तो उसको समझ में आना चाहिए. यस सर. तो आप थोड़ा निश्चिंत होके, थोड़ा कंफर्टेबल फील कीजिए. आप एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं ऐसा एज्यूम कीजिए, ऐसा आप टीचर के साथ बात कर रहे हो, इतना नर्वसनेस आने की जरूरत नहीं है. फील वेरी कंफर्टेबल. आप आंसर दीजिए ना, बिंदास दीजिए, गलत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप गलती करोगे इसलिए तो आए हो यहाँ पे. जी सर. हाँ, तो नर्वस मत होइए, थोड़ा शांति से दीजिए. हाँ, बट वापस एक बार मैंने बताने के बाद नहीं रिटर्न हो रहा है तो फिर मैं डांटूंगा कि भाई एक बार मैं बताने के टाइम पे पूरा जीरो से शुरू करूंगा, पर बाद में आप याद नहीं करोगे ना. क्यों नहीं याद होगा? बिकॉज यू आर नॉट फोकस. दूसरी यस. बार जब होगा तो, और जितना दिमाग में 10-15 चीजें चलेंगी ना, कुछ याद नहीं रहने वाला है. तो फोकस कीजिए, लैंग्वेज पे ऊपर कमांड लीजिए. जो भी चीजें अपने को लग रही है, राइटिंग कीजिए. राइटिंग करने से बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रहती है. और जब भी कोई एक्सप्लेन करता है ना, वो नोट्स के फॉर्म में लिखना ही है. कोई भी सेशन रहे, सिर्फ मेरा सेशन नहीं, कोई भी सेशन फटाफट फटाफट नोट डाउन कीजिए, भले आता रहेगा तो भी. ओके सर. चलो एक बार बता दीजिए तीनों का डिफरेंस. सर अभी, हाँ, कितने बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितने मार्ग होंगे? हाउ मेनी वेज टू रेज द फाइनेंस? कितने वेज सर मैंने लिखे यहाँ पे? सर पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ऐसा वेज है, ये अलग अलग. आपको जो मार्क चाहिए वो स्वीकार सकते हो. हाँ, ऐसा जोड़े नहीं कि मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लूंगा, मेरे पास लोन से भी पैसा आ सकता है. ओके. हाँ. फिर सर डिबेंचर्स. हाँ, डिबेंचर्स. लोन मतलब डिबेंचर्स. ओके. हाँ. सर फिर रिटर्न में क्या देना पड़ेगा मुझे लोगों को? सर रिटर्न में मुझे प्रॉफिट देना पड़ेगा. इन केस ऑफ, डिविडेंड्स. प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड, एंड इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज डिविडेंड. हाँ, दोनों में डिविडेंड देना पड़ेगा. हाँ. एंड इन हाँ. केस ऑफ लोन, So in case of loan, whether profit or loss, क्या देना पड़ेगा पहले वो तो बताओ. so interest. हाँ, लैंग्वेज तो बताओ. लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और Yes. डिविडेंड ये ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इज इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस. ये दोनों का डिफरेंस है. Yes. हाँ. तो हु आर आउटसाइडर्स इन दिस, हु विल नॉट थिंक. अभी मुझे एक बात बताओ, सपोज इस महीने पापा को कम सैलरी मिला, एज्यूम, Yes. तो आप खर्चा करोगे?
नहीं सर। नहीं करोगे, पर आपकी काम वाली बाई रुकेगी? नो सर। नहीं रुकेगी, क्यों? उनको भी सैलरी देना पड़ेगा। वो आउटसाइडर्स है, वो क्यों वो सोचेंगे? आउटसाइडर है। यस सर। हाँ, तो आउटसाइडर्स विल नेवर थिंक फॉर योर प्रॉफिट और लॉसेस, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन अमाउंट, आई वांट रिटर्न्स, बट हु विल वेट? सर मी। हाँ, घर वाले जो है वो हमेशा वेट करते हैं। हु इज घर वाले इसमें? माई सेल्फ। Equity share capital या। and preference share capital. Okay. यस। So they are shareholders. Okay. They are not outsiders. So in balance sheet, if you see, equity means which are owners' contribution. Equity means what? They are owners and they will get dividend. And liabilities means they are outsiders. Got the difference? यस सर। Okay. Very basics. Okay, so I want to make it very comfortable, not only for commerce background students but also other part, because see, this lecture are normally preferred by not only, there are many students who are not having the commerce background, so इसीलिए I want to make them very comfortable. So you got the difference between owner's capital. Owner's capital, what we call it in the company accounts? इक्विटी। Equity. And outsider funds? लाइबिलिटीज। Liability. Share capital is of how many types? सर टू टाइप्स। Two types. One is इक्विटी शेयर कैपिटल, hmm, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। equity share capital will get प्रॉफिट। profit, but what it called as? Dividend. जल्दी जल्दी बोलो ना, अभी चार डिविडेंड। बार वही को बोलने को हो, चलो थोड़ा स्पीड लीजिए अभी अमलान, थोड़ा फास्ट बोलिए। अभी अभी हो गया ना, एक बार सब बताया ना मैंने आपको। यस सर। हाँ, अभी थोड़ा सा स्पीड रखिए। Okay, so it is called as dividend. So this dividend is fixed or not fixed in case of equity share capital? इट इज फिक्स्ड। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में फिक्स्ड। फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट मिलता है। सर नहीं, नो नॉट फिक्स्ड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर। व्हाट दे विल गेट? दे विल ऑल्सो गेट डिविडेंड बट फिक्स डिविडेंड। चलो भाई आगे चलो, इतना स्लो नहीं चलेगा अमलान, मैं आपको इतना ही बोलता हूँ। थोड़ा सा अभी नहीं बताया क्या मैंने? ये सब चीजें लिख के दी क्या नहीं लिख के दी मैंने? यस सर। थोड़ा स्पीड रखिए ना, अभी थोड़ा सा तो अपन क्लास में बैठे हैं, तो इतना स्लो चलेगा क्या? आप मुझे बताओ, इतना स्लो लर्निंग फॉर सीए स्टूडेंट। नो सर। अभी कितना स्पीड में बताना चाहिए था? इक्विटी शेयर कैपिटल दे विल गेट डिविडेंड बट नो फिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे विल गेट डिविडेंड बट फिक्स डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, बट इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इन द केस ऑफ लॉसेस ऑल्सो, तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, इट इज नॉट गिवन अंडर हियर। सेकंड टेबल, सेकंड कौन सा आइटम इन टेबल? You are not comfortable or what? Should I ask you or should I ask other students if you are not comfortable? No, I'm comfortable but just little bit nervous. तो नर्वस क्यों होना है? हाँ मैं आपको कुछ डांटा अभी तक? नहीं सर, नहीं डाटा। तो आप कितना स्लोली बता रहे हो, फिर मैं डांट रहा हूं ना आपको। नहीं बताया मैंने, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि नहीं आपका? फिर यस आपने नेक्स्ट टाइम आपने थोड़ा सा रिटेन करना चाहिए क्या नहीं रिटेन करना चाहिए? सीए कोर्स है भाई, थोड़ा स्पीड लगेगा ना अपने को, इतना स्लो थोड़ी चलेगा लाइफ में। नॉर्मल अकाउंटेंट बनना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको? सर। चार्टर अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा होना चाहिए आप मुझे बताइए? कि इतना स्लो लर्नर होना चाहिए क्या फास्ट लर्नर होना चाहिए? आपको एक ही बिजनेस का अकाउंटिंग करना है क्या लाइफ में? नहीं सर। क्या मल्टीपल बिजनेस का अकाउंटिंग करना है इन लाइफ? आपको मल्टीपल। बिजनेस देखते लोगों का तुरंत समझ के आना पड़ेगा कि भाई हाँ ये बिजनेस है, मैं तुरंत अकाउंटेंट। आप खुद को करना ही नहीं है, बट आपको लुकिंग इनटू देयर बिजनेस, आपको तुरंत हाँ या ना बोल देना है उनको। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा शार्प चाहिए, उसको 10 चीजें समझ में आनी चाहिए एक साथ। थोड़ा स्पीड जी सर। रखिए ना, इतना स्लो लर्निंग थोड़ी होता है। और नर्वसनेस कौन सी बात का है? ये सिंपल चीजें कोई तो एक्सप्लेन कर रहा है, नर्वसनेस क्या? ये सिंपल है। आप ये एज अ स्टडी मत सोचिए, यू एंजॉय दिस थिंग्स। आप मूवी एंजॉय करते हो क्या नहीं? जी सर। तो मूवी जब एंजॉय करते हो वैसा मूवी लीजिए ना इसको। एक पार्ट ये मत सोचे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई मतलब एक टेंशन बर्डन होता है। मैं मेरे बेटे को भी यही समझाता हूँ, वेन एवर यू आर स्टडिंग,
ऑलवेज थिंक कि हम लोग दोस्ती कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के साथ। थोड़ा सा नर्वसनेस तब आता है जब आप बर्डन लेते हो, कोई प्रेशर है आपके ऊपर, सर नहीं, प्रेशर नहीं है। तो आराम से बोलिए, कोई फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो वैसा। ओके, बी ओके। कंफर्टेबल। हाँ चलो, व्हाट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस? कौन सा आइटम हमने लिखा था रिजर्व्स एंड सरप्लस में? um, अब भी किया क्या था बोल हमने थोड़ी सकते? देर पहले, पर आपने लिखा भी नहीं वो। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर आइदर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अभी किया ना हमने, प्रॉफिट्स, वी आर गोइंग टू राइट दिस प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोथ। तो इन रिजर्व्स एंड सरप्लस वी विल राइट बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो according to you. Okay, now you only tell me, now distributed profit is with company or is with shareholder? जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब अभी कंपनी ने सैलरी दे दिया तो भी सैलरी कंपनी के पास ही होगा, ऐसा है क्या? जो लोगों को मैंने डिविडेंड दे दिया तो डिविडेंड देने के बाद भी मेरे पास ही रहेगा क्या वो डिविडेंड? डिस्ट्रीब्यूट मतलब मैंने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। आपने दिवाली गिफ्ट्स लाए 15 और उसमें से 8 दिवाली गिफ्ट आपने दे दिए, तो आपके पास 8, अभी भी 15 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। नहीं सर, कम हो गया। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या दिखेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिखेगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिखेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो कम हो गया ना, वो तो दे दिया किसी को, डिविडेंड दे दिया तो। Undistributed profit. Now, undistributed profit are categorized into two parts. Either general reserve or profit and loss account. If you create general reserve, it's okay. General reserve means what? It will be helpful in the future. General reserve रखा हुआ है मैंने. जी सर। And from where you will get this? From profit and loss account. How profit and loss account is prepared? Income minus expense. Correct? जी सर। So that is general reserve or P&L. If it is not, you are not transferred it to general reserve, it will be in profit and loss account. If it is transferred to the profit and loss account, not transferred, if it is transferred, you can write it in the general reserve. दो अकाउंट्स आएंगे उसमें, जनरल रिजर्व एंड P&L. Other than that, now this is very important. This is a new thing. Now let's understand. Undistributed profit. हाँ, तो these are called as free reserve. What we called it as? फ्री रिजर्व। Free reserves. Now what is free reserves? Free reserves means you can pay dividend out of it. From these reserves, you can pay डिविडेंड आउट ऑफ इट। dividend out of it. This is very important, reserves concept. Yes. So you only tell me that whether this is distributed profit or undistributed profit. सर कौन सा सर? अरे ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट। जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसको क्या बोलते हैं? वेरी स्लो लर्नर, रहने दीजिए भाई, आपको जब आएगा तब बोलना, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिविडेंड अम्लान, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। अब भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स को करते हैं।
जो प्रॉफिट, आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान, आपको दिक्कत है क्या लैंग्वेज समझने में? नहीं सर। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिविडेंड नहीं समझ में आया आपको? जी सर। अब भी किया कि नहीं? कितने मिनट हुए? 5 मिनट हुए रहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स दो टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व, पी एंड एल। पी एंड एल मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस करके, और उसमें से हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। इतना सिंपल है अकाउंट्स। बट आई डोंट नो कि आपने कहां तक पढ़ाई की है आपने अभी तक? सर बीकॉम। बीकॉम कंप्लीट किया? जी सर। तो बीकॉम में आपने कभी पी एंड एल, जनरल रिजर्व ये वर्ड्स नहीं सुने? सुने थे सर। डिविडेंड ये वर्ड कभी नहीं सुना? यस सर। डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ये नहीं सुना आपने कभी? सर एक्चुअली 4 इयर्स हो गए थे, मतलब मुझे सब ठीक भूल है। गया हूँ। अच्छा, मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, यह भी भूल गए आप? नहीं सर। चलो, 2+2 4। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था? सर 1। नहीं भूले? नहीं उसको तो सर। 20 साल हो गए रहेंगे। कोई बात नहीं, आपको कंफर्टेबल कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में एनर्जी से आना। अभी आप बहुत ही ज्यादा, दिमाग में 50 चीजें चल रही है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यू आर नॉट फोकस। मैं आपका प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यू आर नॉट फोकस। ये प्रॉब्लम है, बस होता है, वो आपका हो जाएगा ये कवर। बट अभी बहुत स्लोली लर्न कर रहे हो आप, ओके? और ये स्पीड से आप मतलब आपके सपने बड़े होंगे, तो ये स्पीड से नहीं देख पाओगे, मैं इतना ही बोल रहा हूँ आपको। ये क्योंकि मैंने 3 बार बताया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब डिविडेंड, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो अभी भी। बताया कि नहीं मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब डिविडेंड? यस सर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको मैं बोलता हूं, आप कुछ भी लिख भी नहीं रहे हो। अभी थोड़ा बहुत लिखा होगा, पर जब मैंने शुरू किया तब कुछ भी नहीं लिखा। से यस और नो? सर हाफ मिस हो गया था एक्चुअली, तो लिखते वो लिखते लिखा ही नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको नई चीजें समझ में आ रही है, पर आप बहुत लाइटली लेक्चर को ले रहे हो, बहुत मतलब एक आध पॉडकास्ट देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, इस तरीके से ले रहे हो ये लेक्चर्स को। कोई यस बात सर। नहीं, अभी होगा, थोड़ा स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट होगा। दिस इज द थर्ड डे। मैं तुरंत आपको नहीं बोलूंगा, पर 1 महीने के बाद, और थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरा हो जाएगा, मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ओके? मैं पिछले बैच में भी एग्जाम्पल दिया, आलमान आमलान। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे साथ देर आर 10 ट्रेनीज फॉर वन ऑफ माई पर्सनल ट्रेनर। ओके, पर्सनल ट्रेनर है मेरा जिम के लिए। तो वहां पे 7-8 लोग मुझे हमेशा यही बोलते कि हमें इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है। ही इज गिविंग 1 आवर डेली टू एवरी पार्टिसिपेंट, मतलब एवरी ट्रेनी, डेली 1 आवर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और 3 मंथ्स के बाद भी दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। रीजन इज वेरी सिंपल, एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 13 kgs, 14 kgs इन 4 months। मैं पिछले बैच में भी एग्जाम्पल दिया था। Why I am getting the result? Reason is very simple, because I am also taking efforts after that training. I complete my 15,000 steps. I complete my other targets. I play badminton. I play cricket. So whenever I get time, alternate days. So I'm taking some efforts. I stop junk food. Then only I will get the results ना। अभी ये लोग रात को 12 बजे तक खाते ही रहते हैं, और उनको लगता है जिम किया तो अभी मैं कुछ भी खा सकता हूं। ऐसा नहीं होता है भाई। तो ये एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, ये लोगों के बाद उनको रिजल्ट कभी दिखने वाले नहीं है अगले 50 साल भी। बिकॉज दे वो डोंट वांट टू टेक एफर्ट्स। वो वजन भी हमारा ट्रेनर उठा के देगा, फिर वो 2-3 सेट मारेंगे, मतलब उसके ऊपर वो एहसान कर रहे हैं। और सेम चीज आपका भी होता है। देर आर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट, सपोज अभी लेक्चर मोर देन 150 लोग देख रहे हैं, बट हाउ मेनी विल सीरियसली इज डूइंग दैट? ओनली 10। ओनली 10। अभी वो 10 में आपको आना है क्या, बाकी 140 में आना है? दैट यू हैव टू डिसाइड।
और वो उसके आने के लिए आपको क्लास के बाद भी बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. हैव यू कंप्लीटेड योर नोटबुक? डे बिफोर यस्टरडे मैंने जो भी लिख के देने को बोला था, हैव यू कंप्लीटेड इट? जेन्युइनली बताइए. सर वो क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा था, बस टॉपिक्स सब लिख लिया सर. कितना टाइम गया आपका? सर 1 घंटा तो टॉपिक्स के लिए गया था. और अच्छा, हाँ, अभी आप अन्या को पूछिए कि उसने कितना टाइम लिया. शी इज वेरी सीरियस अबाउट हर स्टडी. अन्या, आपको कितना टाइम लगा बेटा? पहले आपने क्या किया परसों? सर पहले तो लिखा था सारा, उसके बाद उसी को ही पढ़ा था. हाँ, तो स्टडी तीन मटेरियल दो पढ़ा आपने? सर अभी पूरा नहीं हुआ, आधा हो गया, आधा आधा हो गया, पढ़ा. फिर भी कितना टाइम गया आपका सब करने सर में? सर 3.5 hours करीब करे थे. कल से और अभी तक, जब मेरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप कितना घंटा पढ़ाई किया अकाउंट्स का? सर अभी तो बेसिक था तो उतना ही टाइम लगाया, 3.5 hour, मतलब वैसे तो ज्यादा करती. हाँ, तो 3.5 आवर्स आपने डिवोट किया. और अमलान, आपने कितना डिवोट किया? 1 आवर इन दिस 2 days, करेक्ट? यस सर. So this is a basic difference. Okay. Now she यस. also wrote everything. You also wrote except that question answers. But see the difference. Anya, she has invested 3.5 hours. Now who will get the result? आपको मिलेगा क्या अन्य को मिलेगा? आप ही बताइए मुझे. सान्या. हाँ, she will get the result. Why? Because she studied. She followed my instruction. She wrote everything. She read it from the study material. तो अभी नेक्स्ट टाइम से मेक इट श्योर कि आप लोग वापस लिख के लाओगे पूरा का पूरा और याद करोगे. एंड प्लीज रनिंग नोट्स निकालो, ऑल ऑफ यू. चलो स्टार्ट. नेक्स्ट. नाउ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वी हैव कंप्लीटेड, करेक्ट? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. सम आर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. स्टैट्यूटरी रिजर्व मींस कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है. कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है. ओके, ते टाकलंस का तू? जातो. Statutory reserve now is created out of this. One of the example is capital redemption reserve. Now this capital redemption reserve, it is created when preference shares are redeemed. Now at foundation level, this topic is already covered. At intermediate level, when I will start buyback, I will tell you what is the capital redemption reserve. So capital redemption reserve is in case of buyback of equity shares and redemption of preference shares. Buyback of equity shares or in case of preference shares. Okay, redemption. Now, when redemption takes place, redemption means when you give your money back to your shareholder. I have taken from you as a company, I have taken from you 1000 rupees. And when I am giving you back 1000 rupees, at that time I have to create this capital redemption reserve. But this capital redemption reserve is not available for dividend. It is not free. It is not free reserve. But from where it is created? It is created out of profits. So such type of reserves are either free reserve or not free reserves. And if it is not free reserve, you cannot pay dividend. And from where you can pay dividend in future? From free reserves.
from free reserves. Okay, so this is the basic difference between profits, reserves which are created out of profits. And some reserves are not created out of profits, but they are created by their own. For example, security premium. Now, what is security premium? Security premium means my, my face value of the share is rupees 100. For example, if you want to subscribe my share, you will have to pay 130 rupees. How much amount you are going to pay? So this is my issue price. This is my issue price. 130 rupees. But now you paid 130. But in my company accounts, I am going to record 100 rupees in the equity share capital and 30 rupees extra amount in the security premium. Where I am going to record this? I am going to record this in the security premium. Security premium. Premium means excess amount. Premium. What is premium? Premium means excess. मेरा फ्लैट बड़ा फ्लैट है. बड़ा फ्लैट है मीन्स व्हाट? प्रीमियम फ्लैट है. प्रीमियम फ्लैट मीन्स व्हाट? मेरी जगह जो है वो स्पेशियस है. ओके, सो प्रीमियम. Normal flat size is 800 square feet, 2 BHK. But our flat is 1400 square feet. So 600 square feet extra. Extra means what? That is a premium. Okay, so security premium means extra amount. Anything is premium. Premium means excess amount. So friends, 100 rupees is the face value that will be recorded in the equity share capital. And extra amount is security premium. And where do it should be recorded security premium? In the reserves and surplus. I'm going in very detail so you can recall it. So profits are of two types. One which is created out of profits. Profit means what? After deducting expenses from income every year. And this reserves and surplus is created once. Security premium. Whether it is routed through income minus expense? No. It is created by their own. Means at the time of issuing share, you will directly take security premium. And this security premium is also not available for dividend. So it is not free. It is not a free reserve. Understood the difference between profits and own created by their own reserves? So security premium is one of the example. Another example is capital reserve. Capital reserve is also created by own, not out of income minus expenses. So capital reserve, when it is created by, suppose if you sold any asset and you don't want to record it in the profit and loss account, actually that is not correct. Capital reserve is also recorded at the time of forfeiture of shares. Now what is forfeiture? I will explain you later on. Forfeiture of shares, we will see it in the example. So forfeiture, so that capital reserve is created by directly, not routed through profit and loss account. So capital reserve is also, now whether this is available for dividend, if it is received in cash, so it is available. But if it is not received in cash, not available. Not in cash, then not available. Revaluation reserve. Revaluation reserve. Now what is revaluation reserve? For example, I bought one land at 1 lakh. So what is my book value of the land? 1 lakh is a book value. And this is called as historical cost. What is called as historical cost? But today's value of land is 10 lakhs. What is today's value? 10 lakhs. So now I have option. I can record it as 1 lakh rupees. That is at historical cost.
And option number 2, I can record it at 10 lakhs. Okay. अभी देखो, जब लैंड लिया था, at that time this land was 1 lakh and cash goes out 1 lakh. ठीक है. And land will be shown at 1 lakh rupees for n number of years. So that is I'm following historical cost. But suppose if I follow revaluation model, if anyone wants to show it at 10 lakhs, why I should record it at 1 lakh? If this value of the asset is 10 lakhs, why should I record it at 1 lakh? Okay. So I want to show to my shareholder at 10 lakhs rupees. So I want to increase 9 lakhs in asset. We are following double entry system of accounting. So where to record second one? So I will record second effect in revaluation reserve, where I will record this revaluation reserve. And this is only the appreciation of the asset. Okay, this is recreated only if in case of appreciation in the asset. And this 9 lakhs, which is appreciated as per accounting standard 10. As per accounting standard 10, this is created. That is accounting for property, plant and equipment. Property, plant and equipment. So property, plant and equipment is recorded at 10 lakhs and second effect is given in the revaluation reserve 9 lakh rupees. Cash goes out 1 lakh rupees. But this 9 lakh rupees is not available for dividend. So this is not the free reserve. This is again, it is not the free reserve. So this is the concept of revaluation reserve. Whether it is created out of income minus expense, no. It is created by their own, so it is called as revaluation reserve. So how many examples are there? One is security premium. What is security premium? Excess amount collected more than the face value. Face value is 130 rupees. You collected 130 rupees. So extra 30 rupees, we write it in the security premium. Second one is revaluation account. Third one is capital reserve account. So these accounts are not created out of profit but by their own. So reserves and surplus ये होता है head, जहां पे equity and liabilities के बाद reserves and surplus is the second head. Money received against share warrant, no need to understand this. Share application money pending allotment. See, share application money. For example, you have given me 1000 rupees and you told me, sir, please give me share. But I don't know whether I will give you share or not. Until that time, money is with me. So that is not share capital. So I will write it in the escrow account. Escrow means separate account. Separate account is called as escrow account. And in that escrow account, I will keep this amount, which is called as share application money pending allotment. So this head is also not useful. In exam, it is not asked, but it is the part of your balance sheet pro forma. Okay, it is a part of your balance sheet pro forma. Non-current liabilities. Now, what is non-current liabilities? Non-current liabilities means outsiders. Long-term borrowings. Long-term borrowings means what? Loan, debentures. Loan is from bank or loan is huge amount and debentures are small amount taken from the n number of investors. See, loan and debentures are same, but there is one line difference. Loan, normally we take it from bank, and debentures, so bank gives you 1 crore ka loan, 2 crores ka loan, and debentures they are giving you 1000, 2000, 5000, 10,000. There are n number of investors. Okay, in case of debentures, but both will get interest, and interest is payable in case of losses also. Second one is a deferred tax liability. Now, deferred tax liability is created in case of timing difference. Timing difference means what? Timing difference means, as per accounting standard 22, accounting profit and income tax profits are different. Why? Reason is very simple. Depreciation. Depreciation as per accounts, for example, I bought one asset at 100 rupees. मैंने एक asset लिया 100 rupees पे. In accounts, my depreciation is 25. Sir, either accounts in depreciation and income tax depreciation are different? Yes. In accounts, we are using practical concept. In income tax, we are using law concept. Law says you have to provide every year 20 rupees.
As per law, you have to provide 20 rupees. An account says कि practically I'm going to use that asset only for 4 years. So 4 years is a practical life. So why should I provide 20 rupee depreciation? As per accounts, account is always in the, we apply not law language, law rate, we are applying actual rate, which is given by the professional valuers. So accounts and income tax, we are having different rates. And if different rates, but that is for only timing difference. टाइमिंग डिफरेंस क्यों? देखो ये 4 साल में 100 रुपया होगा, ये 5 साल में 100 रुपया होगा. तो देखो, इन अकाउंट्स वी आर प्रोवाइडिंग 5 rupees एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन. इन अकाउंट्स 5 rupees, 5 rupees, 5 rupees. एज पर अकाउंट्स वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन. एंड इन इनकम टैक्स वी आर प्रोवाइडिंग लास्ट ईयर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन. So in income tax, last year will be extra depreciation. So this difference is going to eliminate after 5 years. This difference will be zero. यहाँ पे कौन आगे था? Company's account, Company Act. और यहाँ पे कौन आगे था? Income Tax Act. So then this difference is a timing difference. And whenever there is a timing difference, we create deferred tax account. Okay, we create deferred tax account. Now how that we are going to understand in S22, not now, but remember this head कि deferred tax liability is created due to timing difference. Due to timing difference, लिख के रखो, due to timing difference. और keep this example in mind. Why there is a timing difference? Because in accounts it is different and in income tax it is different. Third one, other long-term liabilities. Now, what is other long-term liabilities and long-term provisions? Now, there is a difference between liability and provisions. Now, what is liability? Liability means actual amount. Actual amount. And provision is estimated amount. Okay. But now, if that liability, for example, telephone bill or light bill, normally when we are getting the bill, we are getting the bill at the in the month of April. For example, if I'm doing the accounting of March, 31st March, but bill normally we get bill in the month of April, correct? So on 31st March, whether I know the exact amount? No, I don't know exact amount on 31st of March. So when I don't know the exact amount, it is called as provision. Wait. It is called as provision. So actual amount, if you know, for example, suppose I want to pay salary for more than 2 years. I have not paid last 2 years ka salary. Okay, due to, and my employees are very loyal employees. They are telling me, sir, you are in, please give us only basic salary, 10,000 rupees, and extra salary. Suppose 30,000 is the salary, 20,000 you can pay us after 4 years. They are very loyal employees. So that 20,000 I have not paid for more than 1 year. So where I will record that? Other long-term liabilities. Where I will record that? Other long-term liabilities. See, this is the only practical example. Practical scenario, employee will never stop. But only this is example, bookish example. So liabilities other long-term liabilities means if your salary is payable more than 1 year. Okay. And if you are not paid that, so this is other long-term liability. One example. Or your creditors are not paid more than 1 year. So that will be your other long-term liabilities. And what is long-term provisions? Suppose if I am going to pay them pension after 20 years. So where I will record, I don't know exact how much is the pension. So that pension will be long-term provision. That is based on the actuarial valuation. In AS15, we are going to see that. Okay, how to calculate long-term provisions, how to calculate it, it will be in the AS15. So I don't know exact amount. Based on their last drawn salary, that amount is payable. And last drawn salary, we don't know. So that will be long-term provision. Okay, so provision means exact amount is not known. And liabilities exact amount is known. But wait, light bill exact amount is not known, but you can easily calculate what is your light bill. Everyone knows कि अपना light bill कितना आएगा अंदाज से. तो we don't need any extra calculation. Extra calculation means complicated calculation, and complicated calculation means what? Substantial degree of estimate. Substantial degree of estimate means you need
extra calculation. So extra calculations are called as substantial degree of estimation. And if this is not substantial degree of estimation, though it is estimated amount, but we bifurcate it as a liability. So I have seen many balance sheet of chartered accountants where they record light bill, they record it in the other short-term provisions. No, it is wrong. It should not be recorded in the short-term provisions, where they should record it under the head other current liability. Okay, why? Because it does not require any extra calculation. Income tax calculation, income tax provision, we need expert. So we need expert for that. It is a short-term provisions. But liability provision for light bill, telephone bill, where it should be recorded other current liability. तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है. जहां पे एक्सपर्ट कैलकुलेशन लगता है ना, एक्सपर्ट कैलकुलेशन, वो प्रोविजन के अंडर आता है. और जहां पे बेसिक कैलकुलेशन है कि कोई भी एरा गेरा बोलेगा कि मेरा लाइट बिल कितना आएगा अंदाज से, मेरा लाइट बिल है ना सर ये महीने का 3,500 आ सकता है, 3,200 भी आएगा, 3,600 भी आएगा, पर 3,500 आने वाला है, तो 3,500 ये कोई भी बता देगा, तो वो ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लगे क्या? नहीं, तो वो लाइबिलिटी के अंडर ही बताओ. बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डालते हैं, जो गलत है. जो गलत है, कहां पे बताना चाहिए? अदर करंट लाइबिलिटी. क्यों? बिकॉज सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. क्या वर्ड यूज किया? सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. Sir, we got the difference between two. Short-term borrowing, trade payable, other current liability, and short-term provisions. Got the difference, beta? Got the difference? Okay. Now, interest on OD or interest on loan, which is not yet paid. For example, I have taken a loan on, I have taken a loan on 1st of May. And when my loan will be matured, my loan will be matured on 30th of April. Suppose I have taken a loan for 1 year. Meanwhile, there is a 31st March. Meanwhile, there is a 31st March. It is your cutoff date. What we called it in accounts? We called it in accounts as a cutoff date. Suppose I have taken a 1 lakh loan and 30th April, I have to pay 12%, 12,000. So as per cash concept, when I am paying the loan, I am paying loan on the 30th April, 1,12,000. How much I am paying? 1,12,000. Extra 12,000 is interest. But as per accrual concept, 11,000 will be recorded in 31st March, before up to 31st March, and after 31st March we are recording 1,000, because this is of 11 months and 1 month will be interest will be payable in the next year. As per accrual concept, though you are not paying loan, now what is the entry? Entry will be interest expenditure account debit, means interest is expenditure, so interest account debit, interest is expenditure, therefore debited, to interest payable. And what is the interest payable? 11,000. Now this 11,000 which I am going to pay will be debited to profit and loss account. And second effect, what this interest is called as? Other current liability. Where to record this? Other current liability. And this other current liability is called as interest accrued. Interest accrued. मतलब जमा हुआ, but not due. Due means what? It is not payable, but not due. तुरंत पे नहीं करना है. Accrue हुआ, but not payable. And when it will become interest accrued and due? On 30th April. On 30th April क्या होगा? Interest accrued and due. Due मतलब अभी 12,000 पे करने के बाद जीरो लाइबिलिटी. बट जब तक पे नहीं करते हो तो ऑन 30th April it will be interest accrued and due.
And on 31st March, it will be interest accrued, but not due. पेमेंट के लिए बाकी नहीं है, पेमेंट 30 अप्रैल को करना है. Okay. When I was studying CA course, these two are recorded in different heads. दोनों के होते. But now your life is very simple. Both of them are recorded in other current liability. Both of them are recorded. 11,000 रहने दो या 12,000 होने दो. It will be recorded under other current liability. तो ये लाइफ अभी सिंपल हो गया. बट हमारे टाइम पे थोड़ा हेड अलग होता था. अभी जाने दो क्या होता था वो मत पूछिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. पर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू. सी आज थोड़ा टेक्निकल सेशन है. आज का सेशन इज नॉट वेरी सिंपल सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मेनी कॉन्सेप्ट्स. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वन बाय वन हेड, deferred tax liability is a timing difference, long term loan, secured loan, unsecured loan. Secured loan means what? You have given some property as a mortgage or stock as the hypothecation. वो वर्डिंग्स मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद. तो you have given some property, गिरवी रखा है. और जो गिरवी नहीं रखा, unsecured loan. Bank code is normally unsecured loan. Okay, normally. Then other current liability, other long-term liability. Long-term liability example, long-term creditors. Provision, substantial degree of estimation. Okay. And trade payable means creditors, simple. Short-term borrowing, more less than 1 year. Bank code will be the example of short-term borrowing. And your debentures or secured loan will be a long-term borrowing. Then other current liability you understood. What is short-term provisions? Under short-term provision, income tax provision. Income tax provision or warranty. Warranty is also recorded under short-term provisions. So these are the some examples. Correct? Assets side. In assets, you have non-current asset. Non-current asset means which is with you for more than 1 year. Property, plant and equipment, and intangible assets. Under that property, plant and equipment, intangible assets. Now, capital work in progress, you will understand in S7. And intangible assets understand in the under development S26. So, intangible assets, property, plant and equipment, when to record it, S10 will tell you. Intangible assets S26 will tell you. Capital work in progress S7 and intangible assets under development S26. So you can write over there. Property, plant and equipment S10, intangible asset S26. When to record under assets? Capital WIP, recognition criteria. Capital WIP S7 and intangible assets under development S26. Non-current investment S13. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसके अंडर आएगा बेटा? S13 के अंदर आएगा. ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. So non-current investment is also more than 1 year if you invested somewhere, not in the business, but you invested outside because you have idle funds. Why you are investing? कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट क्यों करता है बाहर? जब घर में ही इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, तो बाहर क्यों इन्वेस्ट करता है? बिकॉज इज इन्वेस्टिंग, बिकॉज दिस फंड्स कैन नॉट बी आइडल फंड्स. ऐसे नहीं रखना है उसको, तो ही इज इन्वेस्टिंग, ही हैज एक्स्ट्रा फंड्स. ओके. Deferred tax asset, timing difference. Long-term loans and advances. I have given some advances. I have not taken. This is asset. Asset means I have given. Okay, I have given long-term advances. I have given someone more than 1 year का loan. Okay, it is not allowed. Directors को तो दे ही नहीं सकते. But suppose you have given some advances to your party, debtors को. Okay, sorry, creditors को, not debtors को. Creditors को you have given some loan. So, our advances, so that will be covered over here. And other non-current assets. Other non-current assets is also covered, means residual category, which is not above, you can record it in the other non-current assets. Residual category. Current assets, how to remember this? Current investment. Current investment less than 1 year. Your fund should not be idle. Second one is inventory. Inventory means what? Inventory are of 3 types. In S2, we are going to see that. Raw material, WIP, and finished goods. So this inventory is on 31st of March, closing stock. In simple language, it is closing stock, this inventory, which is recorded over here. Trade receivable.
amount which is receivable, debtors, simple language. Cash and cash equivalent, cash balance plus bank balance. Okay, cash plus bank balance, cash and cash equivalent. Short-term loans and advances. If advances given then less than 1 year, and other current assets over. So this balance pro forma. तो बैलेंस शीट का प्रो फॉर्मा every item. See which are difficult items. Share capital easy now. Reserves and surplus थोड़ा सा difficult होता है. Then you have understanding of interest accrued but not due. वो important है. Other current liability. You have to understand the difference between liability and provision. Asset side is very simple. Asset side is nothing. Okay. Liability side थोड़ा सा complicated है. Break में जाने के पहले I am going to tell you कि कितने मिनट में बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा हो सकता है. याद करना है. एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड दिस प्रोफॉर्मा. एंड व्हाट इज द योर ब्रेक वर्क. ब्रेक वर्क में आपको करना क्या है. यू हैव टू टेल मी इलस्ट्रेशन 2 के आइटम्स कहां पे जाते हैं. इलस्ट्रेशन 2 आइटम्स. ओके. ऑल दीज आइटम्स वेयर टू ट्रांसफर इट. हाउ मच टाइम इट टेक्स एक बार देख लीजिए. इक्विटी एंड लाइबिलिटी शोल्डर फंड्स. Share capital, reserves and surplus, money received against share warrant, application money received pending allotment. Non-current liability, long-term borrowing, deferred tax liability, other long-term liability, long-term provisions, current liability, short-term borrowing, trade payable, other current liability, short-term provisions, assets, non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital, WIP, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax asset, long-term loans and advances, other non-current assets, current investment, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. बहुत क्लियरली बताया तो 33 सेकंड्स. मंत्र के जैसा बोला तो इक्विटी एंड लायबिलिटी शोल्डर अपन शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग ट्रेड पेबल अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विटी इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटल डब्ल्यूआईपी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डेफर्ड टैक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अदर नॉन करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी ट्रेड रिसीव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस अदर करंट एसेट्स. 22 seconds. 33 seconds if clearly answered. 22 seconds थोड़ा फास्ट में गए तो ओके. सो चैलेंज टू यू बीट दिस स्पीड. 22 seconds का इज योर टारगेट एंड कंप्लीट इट. बैलेंस शीट प्रोफॉर्मेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको कंप्लीट कीजिए. एंड व्हाट इज योर क्लास वर्क. थोड़ी देर में वी विल स्टार्ट विद दिस प्रोफॉर्मा ऑफ इलस्ट्रेशन 2 वेयर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट. तो वो हम लोग देखेंगे. तो ब्रेक के बाद इलस्ट्रेशन 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. यस 15 मिनट्स का ब्रेक है आपको. यस.
Students, before starting illustration 2, we are going to understand profit and loss account also. In profit and loss account, we are having first one, revenue from operations. Very, very important. Revenue from operation means sales. In case of trading, if you are dealing in goods, and if you are service provider, so service fees which we have collected, professional fees which we have collected, so we are not having like sales item over here. We are having revenue from operations. So this P&L is not with trading and P&L, is only P&L. So here trader will also have the same P&L and service provider will also have the same P&L. Okay. So previously it was trading and P&L, but now it is only P&L in company's accounts. Other income, rent received, dividend received, interest received will be recorded over here and you will get the total revenue. So revenue side is very simple. Now expenses. Now please have focus while doing expenses. Cost of material consumed. Now material consumed is related to raw material. Now this is related to raw material. Raw material opening stock. For example, if I am having 10 Maggies, I purchase 20 Maggies. I purchase 20 Maggies and opening stock 10 Maggies, purchases 30 Maggies. So total Maggies available 40 minus closing, minus closing 5 Maggies. So I consumed 35 Maggies. So 35 Maggies I will write over here in rupees, quantity nahi, rupees mein. So raw material consumed is opening plus purchases minus closing. Remember this pro forma. Purchase of stock in trade. See, this head is only for manufacturer. Raw material consumed, this head is only for manufacturer. Now purchases of stock in trade. Stock in trade means this is normally for trader. Now P&L is common for manufacturer and P&L is also same P&L is for trader. So trader is not consuming goods, but trader is buying and selling. So consuming is not for trader. Stock in trade purchases is only for trader. Purchases is for trader. Consumption is for manufacturer. But we are having, see, now manufacturer will have dash in the purchase of stock in trade. And raw material consumed, he will write something. But now manufacturer has a stock of WIP and finished goods. Raw material opening and closing he has already adjusted in consume. But what is about WIP and finished goods? So we are going to write changes in inventory of finished goods. Now finished goods is for trader also and manufacturer also. Finished goods is for both, but we will take opening and closing ka difference. If opening is greater, opening means debit is greater
and debit we are writing in expenses side, so we will write it in the positive sign. And if opening is less than closing, so we will show it in the negative figure. Remember this. Work in progress is for manufacturer and stock in trade is for trader. So finished goods we can call it as only for manufacturer. Okay, trader we will write only stock in trade. But see, what we are going to take in these changes. Changes means what? Opening and closing difference. In today's session, you have to understand only pro forma. Okay. It's not like that you will understand everything now. No. If once you got the pro forma, manufacturer, he will have consumption. Trader, he will have purchases. And changes in inventory, we will take a difference. If opening is greater, we will write it in the positive sign. If closing is greater, we will write it in the negative sign. And stock in trade is for trader. Employee benefit expense. Now, what is in this employee benefit? Wages, salary, pension, provident fund contribution, whatever is there, we are going to write it in employee benefit expense. Finance cost. So related to employees, everything in the P&L. Finance cost, interest. What is finance cost? Interest. Depreciation and amortization. Depreciation is for tangible assets. Amortization is for intangible assets. And other expenses is a residual category. You can write administrative expense. You can write selling and distribution expense in this, or you can have separate head also. Total expense. And income minus expense, we are having only, we don't have extraordinary and exceptional items. We are going to understand that P&L later on. In this topic, we will write only profit before exceptional and extraordinary item and tax, less income tax. Exceptional item, extraordinary item, no. We are going to understand it is only profit before tax. Then tax, less tax and profit after tax. Bus. Now these items we will ignore. Okay, this continuing operation we will ignore. Okay, why? Because we have separate accounting standard for this. In exam, what you have to write? After income minus expense, you will write profit before tax. This is your P&L. So what is new for you? See, this is very new things. I won't say that this is easy things. Okay, chalo. I will take your difficulties first. If you have any difficulty, you can raise your hand. If you are not getting any head, you can ask me. Om, do you have any difficulty, my dear? No. Harshal, do you have any difficulty? Any head you want to ask me? हेलो सर हाँ बोलो हर्षल. सर मेरा एक्चुअली इन दिस सेशन आई हैव नो डाउट बट इन अ प्रीवियस सेशन आई हैड अ वो डाउट लास्ट में लेते अभी यही सेशन के बारे में बात करते हैं. ओके इन अ संडे क्या सर Gopal, do you have any doubt? No, sir. Yes. Sandeep Thi. Sir, good morning, sir. I just want to know, I want you to repeat the part after the expenses. Sandeep Thi, in Sir, okay, my income minus expenses will be profit before tax. You don't have other items in this chapter. Those items we have to understand accounting standards for that. Accounting standard 5, accounting standard 24 for continuing operation and discontinuing operation, and extraordinary item and exceptional item, you will understand it in the accounting standard 5. So in exam,
if this problem comes, so you have only income minus expense, this expense, so you will get profit before tax. That from profit before tax, you will deduct tax, and then you will get the profit after tax, and that profit after tax, you will take it in the reserves and surplus. So other items we don't have to recall in this chapter. We'll see that other headings, but not now. We will see that headings in accounting standard 5 and 24 after accounting standard 5 and 24. Understood better? Sandipti, where are you? Yes, understood. Yes, sir. Okay. Next. Yes, Divya, any doubt? यस सर. बोलिए. सर ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं ये प्रॉफिट में से तो नहीं होते, लाइक इनकम माइनस एक्सपेंस से हम लोग नहीं निकालते. नहीं 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 नहीं, वो बाद में डिवाइड होते हैं. पहले आप पैसा कमाओगे और उसके बाद आपको वो पैसों के साथ क्या करना है बाद में डिसाइड करोगे ना. ये कमाना है और उसके बाद साइड में रखना है. साइड में रखने को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं. एंड एप्रोप्रिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ P&L, इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. अंडरस्टूड? ओके सर, ये स्पेसिफिक रिजर्व्स नहीं होते ना ये? कौन से? ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. स्पेसिफिक रिजर्व्स, उनको उसी के लिए लगाया जाएगा, वो उसमें से डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. ओके सर, थैंक यू सर. यस. नेक्स्ट दीक्षा. यस बेटा. यस दीक्षा. यस समीरन जी. चलो चलो अनम्यूट करो फटाफट. भवानी. हाँ समीरन. समीरन. Hello. हाँ जी बोलिए. Sir, I have a doubt regarding Sunday debtors. Uh, Sunday debtors closing balance comes credit balance where we show in liability set under short term provisions or Other current liability. other current liabilities. Yes. Okay, sir. Okay, okay. Thank you. Yes. Samiran Medhi. Dhanlakshmi. Sir, a substantial degree of estimation means it needs extra calculation, sir? Yes, yes, yes. We need some expert calculation, not extra, some expert calculation in simple language. Okay? Okay, sir. But, yes? Revaluation reserve, sir. In the books we will books we will show book value, but historical cost we will show. No, if you are showing historical cost, then there will be no revaluation reserve. If you are showing it at revalued figures, then there will be revaluation reserve, no? Okay, sir. Okay. Sushmita. Sir, just wanted to check in capital reserve, no? You had told something about cash and non-cash. I did not get it. Could you please repeat? Capital reserve may be revaluation reserve. Okay. Some people may write it as revaluation reserve. So you are not getting it in the cash. You are just revaluing your asset, and here capital reserve you are increasing. So it is not received in cash. So are you going to pay dividend on that profit? No. No. So that is not received in cash. And received in cash means, suppose if you are selling some asset, okay, so 100 rupees is the book value, you are selling it at 120 rupees, so 20 rupees you recorded in the capital reserve, so you received that is in cash. Yes, sir. 120 rupees I received in the cash, therefore you can pay dividend out of that. Okay. This is not allowed as per accounting standard, but some people may use this strategy of capital reserve not recording in the profit and loss account. So then in that case, you can use that profit for dividend distribution. Okay. And the securities premium, is it free or statutory? Statutory. It is not free, not statutory reserve. It is created by own, and that is the excess amount. And security premium is collected at the time of collecting shares. So shares is the statutory. Shares is the
direct balance sheet item. It is not routed through P&L. Okay. Okay, so One you last cannot pay doubt dividend. I have. Yes. So we are looking at the permanency order in the balance sheet Balance right sheet. now. Huh. So liquidity order would be different from this, is it? It will be Principal studying reverse. Liquidity order will be it? Okay. reverse, but that is not allowed. Okay. Liquidity means in cash. So which now are you going to, for example, suppose you want to pay your creditors. So are you going to sell fixed asset for that, or are you going to use cash and cash equivalent? Cash and cash equivalent. So that will be liquidity order. Okay. So liquidity order is from bottom to up. Okay. Okay. Yes. And this is not allowed, like even Not when there is no, some. presentation is in the permanency order. No. Okay. 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 Thanks. हाँ. हर्षल पाटिल. हेलो सर. हम्म. सर आपने जो बोला था कि एग्जाम में जस्ट पीबीटी आएगा मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस देन टैक्स एंड आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके सो पैट तक ही आएगा क्या? पैट तक आएगा. हाँ. प्रॉफिट ओके आफ्टर टैक्स तक आएगा. ओके सर, वन ही क्वेश्चन था मेरा. क्या? चैप्टर फर्स्ट जो है हाँ. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके रिगार्डिंग था. बोलिए. Is accounting standard interpretation on accounting standard which address questions that arise in a course of application of standard which included in a process of a setting the standard as a step number 6, which is a comment received on a exposure draft. हम्म. हम्म. तो नहीं समझा क्या आपको? तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था सर, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है मतलब बोर्ड विच क्या वो एड्रेस करता है क्वेश्चन को विच दैट अराइज इन कोर्स ऑफ हाँ, तो एप्लीकेशन वही ऑफ दैट. करेंगे ना. अभी ओके आपके क्वेश्चन के आंसर्स कौन देगा? एक्सपर्ट पर्सन. या सर या. करेक्ट. तो एक्सपर्ट मींस कौन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. तो एक्सपोजर ड्राफ्ट होने के बाद जो भी कमेंट्स आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तो एड्रेस करेंगे ना उसको. ओके सर, मीन्स करेक्ट. कमेंट रिसीव्ड जो होंगे ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट ईडी. हाँ, लोग अभी कमेंट्स मतलब ओपन टू ऑल रहता है ना, कि आप कमेंट्स के लिए ओपन रखो. गिव यूर एडवाइस. तो वो एडवाइस पे अच्छा लगा तो कंसिडर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देंगे. ये क्या था करके. ओके सर, मीन्स इट्स अ जजमेंट बेस्ड नो. हाँ हाँ हाँ. ओके सर, थैंक यू सर. यस गोपाल. आनंद खत्री. चलो बोलो बेटा फटाफट. Uh, Hi, sir. Actually, I am not part of this batch. I am part of the previous batch, the May 2026. So today I saw this live class is going on. I joined to thank you and praise you for your efforts. You are doing a lot of good work and you are helping us a lot. Thank you so much. Yes Anand, thank you. I am doing assets based accounting right now. I started my studies in December only. So I am following the May batch from YouTube. Okay, no problem. Otherwise you can join this batch. It will be Yes. easy for you. Yes. Thank you so much. आशुतोष. हेलो. हाँ बोलिए. हेलो. बोलिए ना. मॉर्निंग सर. सर इन बैलेंस शीट अदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में व्हाई वी शुड क्रिएट द प्रोविजंस? अभी पेंशन आपको देना है 20 साल बाद. आपको फर्स्ट पता है क्वेश्चन एग्जैक्ट सर मेरा ये. अमाउंट कितना देना है? नॉर्मली पेंशन की अमाउंट कैसे डिसाइड होती है पता है नो आपको? सर. Last drawn salary into नो number सर. of years of service you completed. According to that, you are going to give pension, yeah, some benefits, extra perks. Okay. So we don't know exact amount, and therefore it is called as provision. Sir, if we don't know exact amount, then why we should need create the provisions? So because of accrual concept, whatever amount you want to pay after 20 years, you will divide it over 20 years, no? It means expected amount. हाँ, expected amount is not a question of one day. You are going to pay it after 20 years. तो अभी आप मुझे बताओ, आपको घर लेना है
तो आप एक साल में पैसा कमा लोगे या ओवर द पीरियड पैसा कमाओगे ओवर द और पीरियड। फिर घर लोगे? जी। एक साल में पैसा कमा के घर लेता है क्या कोई? तो जब नो सर, एम्प्लॉयज को ओवर द इतना, पीरियड लूंगा, मतलब। अरे मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वो पैसा आपको हर साल साइड में रखना पड़ेगा ना। तो जब एम्प्लॉयज को 20 साल पैसे के बाद उसको पेंशन देना है, तो वो पैसा 20 साल बाद के बाद जमा करोगे या आज से थोड़ा 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 पैसा जमा करोगे? आज से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे। तो आज से करना पड़ेगा, तो आज से एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ेगा। समझा? इजी। ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था, सपोज दैट, यस सर, suppose that I have received the services and goods, but bill I have not received. So whether we should create the provisions or not? Suppose the security services I have received in a company क्या क्या क्या? and the cutoff date is over, then whether should create? Suppose that योर हमने कोई वॉइस इज नॉट सर्विसेज क्लियर रिसीव की, आशुतोष। बट उसका उसका बिल नहीं अभी तक आया। हाँ, बिल नहीं आया तो हेलो, क्या? अभी क्लियर सर? हाँ, बिल नहीं आया तो क्या? बिल नहीं आया तो उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा या नहीं? अभी सर्विसेज का एक्सपेंडिचर तो बुक सर्विसेज का करना ही बिल नहीं पड़ता है आया है बिल। तो। अभी ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। आप पहले से बुक कर रहे हो तो बिल इज ओनली सेकेंडरी मैटर। तो आप 31 मार्च के पहले तो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। बिल इज द ओनली लॉ, मतलब आप बोलोगे सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। ओके। हेलो, एस वॉइस इज नाइन ब्रेक में कर वी रहा विल कवर आशुतोष, S9 में। डोंट वरी, है। योर वॉइस इज ओके सर। ऑल्सो नॉट क्लियर। यस दीक्षा, बोलिए फटाफट। चलो जल्दी बोलो बेटा। समरिन मेरी, आप वापस से हाथ हैंड रेज किया है बट यू आर नॉट ऑडिबल। यू हैव टू ज्वाइन इट वन मोर टाइम। दीक्षा आपका भी आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। यस। और आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है वाइल एप्लीकेशन में ना। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ये सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन था, तो मतलब एक टाइप से अपन एजम्पशन लगा रहे हैं क्या कुछ भी चीज़ में, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स हो गया तो उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, और जब उसे सेल कर दिया जाएगा तो उसकी क्या होगी वैल्यू? बताऊंगा मैं आपको जब S29 होगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। Uh, काम Hi, करो। sir. ओके। ओम। Hello. सर Audible, एक sir? एक क्वेश्चन। मिनट एक मिनट आली जी। हाँ जी। सर जैसे कि अपन सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कैपिटल रिजर्व अपन शेयर होल्डर्स के लिए रख ये रहे थे। आपके दिमाग में प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट ही अलग है। दैट इज यू आर कॉलिंग अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड यस सर। प्रोविजन इज फॉर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट वी आर डूइंग दैट प्रोविजन। तो रिजर्व्स और प्रोविजन का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोविजंस मतलब जो पेमेंट में करना चाहता हूं जिसकी अमाउंट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसको प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है सर। समझा? ओके सर। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग हेड है, प्रोविजंस अलग हेड है। आप दोनों को मर्ज क्यों कर रहे हो? प्रोविजंस अलग मत करो। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रॉब्लम आएंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा। ओके। नहीं सर, मुझे मतलब ये जानना था जैसे कि अपना जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, वो नहीं है, इसमें। वो मैं बताऊंगा आपको। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ प्रोविजन। डेप्रिसिएशन ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप अभी वो प्रोविजन को मर्ज मत करो। मैं क्या बोला आपको? ये प्रोविजन मतलब जिसका पेमेंट करना है वो प्रोविजन से इधर। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम एसेट में से माइनस करके बताते हैं। ओके सर। ओके ओके, तो वो प्रोविजन को इधर मर्ज मत करो। वो प्रोविजन सर अलग है। और ये दूसरा। प्रोविजन मतलब जो पेमेंट करना है ना आपको, जिसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ओके सर समझ गया सर। ओके ओके। यस। Hello, sir. हाँ जी। I'm Sir, can you explain deferred tax when like occurs, like deferred You tax won't assets understand and now. liability? You will understand it in the accounting standard 21 22. Okay. It is now just for this. See, you are not going to become Rajnikant in one day. It will take a Yes. process, and I will tell you exactly in S22 because you won't understand it now. Okay, sir. No issue. Thank you, sir.
Okay. Last one, Bhavani ji. Sir, aging is compulsory for exam purpose for trade payables and trade receivables. Why are you stuck in that trade receivable and trade payable? No, it is not compulsory. You just have to record more than 6 months and less than 6 months. You show in the format is 6 months, 6 months to 1 year, and 2 to 3 years like that. No, 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 I no, asked no, nothing. no, no. Only for understanding. In exam, you have just Okay. only more than 6 months and less than. If you are going to write the everything in the exam, so your Okay. financial report, that financial statement will be of almost 25 pages, and it will take minimum 8 hours to write everything. Okay. Okay, Okay, so in sir. Okay. exam it Okay, will be, sir. yeah, we'll see that. Don't worry. Okay, but in Okay, real sir. life, Thank you. yes, it will take some time. Okay, sir. Okay. Thank you. Ashish, last question. Diksha, you are not गुड audible. मॉर्निंग सर। हाँ जी. सर मेरे को ना ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ यूट्यूब से। अच्छा. तो मुझे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप मेरे ग्रुप को नहीं है, लिंक शायद चाहिए। से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वो आपको आ ओके जाएगा, मनीष जी भेज देंगे अभी ग्रुप पे. ओके यस. सर, थैंक यू। दीक्षा, आपने माइक ज्वाइन नहीं किया है शायद से, सो यू आर नॉट ऑडिबल. तो आप एक बार अच्छे से हैंडसेट में जब भी आप एप्लीकेशन को ज्वाइन होते हो तो यस बोलो साउंड को, तो यू विल गेट दैट. ओके, चलो. सो आई होप आई कवर्ड एवरी क्वेश्चन. नाउ what is your homework? Balance sheet pro forma, you have to see it in detail. And in next session, you solve illustration 2, illustration 3. I want everyone will try this. Okay, illustration 3 and 5 and 6. So your homework, you just have to see these questions and balance sheet answers. Okay, answers given by the institute, and whatever item where you will stuck, you will write over there ki IMP, or means you give some star mark or something. Okay, so it will be easy for you in next session. So your homework is 2, 3, 5, 6. I'm going to cover 4 questions. Okay, chalo. So thank you, and we'll see it in the on Sunday. And what is your homework? You have to write in concept book that page number 140, P&L and balance sheet pro forma. That you have to write it in the concept book. Okay, so today you don't have to take any screenshot. You just have to write down P&L and balance sheet pro forma, and you go through the illustration 2, 3, 5, 6. Okay, so this is your homework. Thank you, take care, and bye bye. Yes, yes, yes.